let's start with this. Okay, so let's start. The question asked like explain the structure of the vacuoles. So this is the another important cell organelles in the plant as well as in animal cells. These vacuoles are nothing but the single membrane bound cell organelles which are present in the plants as well as in animal cells. And it is a large space in plant cells enclosed by a single membrane. If you can see the figure of the plant cell, so this central transparent is the vacuole. So this vacuole covers the largest part in the cell, plant as well as in the animal cell. So before starting this, first of all, you have to watch this video. So, uh,
you have an idea about this vacuole? So vacuole it is like the dustbin. जैसे हम हमारा कोई भी वेस्ट जो भी घर में वेस्ट रहता है वो डस्टबिन में डालते हैं एज लाइक सेम इन प्लांट्स और एनिमल से जो भी डस्ट कंपोनेंट्स या डस्ट मटेरियल है these material are stored in the vacuoles. So it is like the dustbin. So this vacuole it is the having the large space and enclosed by a single membrane. So mostly these vacuoles is present in all plants and fungal cells. These are also present in protist animals and bacterial cells. So in all types of cells, these vacuoles are present. So next is about the structures of the vacuoles. So vacuoles are the multifunctional cell organelles. In right hand, there is the structures of plant cell. In plant cell, there is the a large single membrane vacuole is present at the center or at the sides of these cells. So these vacuoles play the multifunctionals. They play the different role in different processes. So mostly this present in the center of the plant cell or sometimes this vacuole is having the tonoplast. So tonoplast is nothing but the single membrane encloses the cavity arises. जो vacuoles की membrane है, this membrane is known as the tonoplast. The tonoplast membrane is remarkable and it initially surrounds a small amount of fluid and then it stretches to become a cell organelle by intake of water. So this tonoblast is the membrane, and through this membrane, the intake of the water will be takes place. So intake of the water as well as some जो भी waste product है, these waste product will be intake by this membrane. So this tonoplast encloses components such as water. In that water, there is the organic and inorganic molecules, and it also included some enzymes like the amino, जो organic and inorganic molecules like the some amino acids, then sugars are the waste product which are stored in these vacuoles. So the vacuole, it is like or they form the small vesicle. This vesicle enlarges by the intake of water. Therefore, the vacuole having the no definite shape and size. जैसे उसमें वाटर जैसे कि स्टोरेज वहाँ का बढ़ेगा यदि स्टोरिंग के लिए ज्यादा मटेरियल है आया उधर तो जो भी हमारा वैक्यूल है वैक्यूल का साइज ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा यदि स्टोरिंग जो वेस्ट प्रोडक्ट यहाँ पे कम आए तो उसका साइज ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा सो अकॉर्डिंग टू द waste material the vacuole size will be changed and so these structures of vacuoles are varied from cell to cells and plant to plant they are always changed in different cells as well as in different plants so according to the scientists the vacuoles is divided into the two types. First one is the protein storage vacuole that is having the neutral pH and lytic vacuole that is acidic pH. So according to the uh, pH level, there are two types. One is the protein storage vacuoles and lytic vacuoles. And in the mammalian cells,
These vacuoles is similar to the lysosomes. In mammalian cells, in that body, there is the lysosome cell organelle. So these lysosomes is same like the vacuoles. जैसे plants और animal cells में vacuoles है, same like in mammalians, there is the lysosome cell organelle. So, of the vacuole changes the physiological activities of the cells. जैसे मैंने बताया जहाँ जैसे वेस्ट आएंगे उसी तरह उसका साइज चेंज हो जाएगा. तो इन रेस्पिरेशन एक्टिविटी, रेस्पिरेशन में क्या होता है? When stomata is open at daytime and closes at night time. So the shape size of the vacuole of lip is also uh, changes according to the vacuole shape enlarges. They remain turgid during daytime and they will be shrink at the night time. So जब भी ये वैक्यूल्स टर्जिड हो जाएंगे, जो ल्यूज है हमारे ल्यूज वगैरह ऐसा सब फ्रेश दिखेंगे. जब वो श्रिंक हो जाएंगे, मतलब जो वैक्यूल से वैक्यूल श्रिंक हो जाएंगे, तो जो प्लांट्स है प्लांट्स भी ऐसे मुरझा के जैसे सोए हुए थे ना वैसे सो के सो जाएंगे. तो जब भी डे टाइम रहता है तो जो वैक्यूल से वैक्यूल एंड जब नाइट होती है तो जो भी वहाँ के जो वैक्यूल सेल्स है दे ऑटोमेटिकली shrink. So these vacuole changes according to the, जब भी स्टोमाटा ओपन होता है मतलब वहाँ पे रेस्पिरेशन, वहाँ प्लांट्स अंदर लेते हैं. और जब भी स्टोमाटा क्लोज हो जाता है तब क्या होता है? वहाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड है, मतलब नाइट के टाइम पे क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट बाहर डाल, तब प्रोसेस है रेस्पिरेशन प्रोसेस. और जो वैक्यूअल शेप, वैक्यूअल का शेप है, दीज आर according to the respiration, the vacuoles also changes their shape and sizes. Second is synthesis. So protein synthesis में क्या होता है? Their cell activity is maximum, means protein synthesis is higher. The protein is synthesized and stored in vacuoles. Thus, during active state of the cells, the vacuole sizes larger. तो जब भी प्रोटीन सिंथेसिस होता है तो वहाँ सेल एक्टिविटी, जो भी सेल्स एक्टिविटी है, सेल एक्टिविटी फास्ट होती है. तो जैसे ही मतलब वहाँ प्रोटीन सिंथेसाइज किया जाता है. तो जब भी प्रोटीन सिंथेसाइज किया जाता है ऑटोमेटिकली जो वैक्यूल साइज है, वैक्यूल साइज बढ़ जाती है. जब सिंथेसिस कम होगा तब वो ऑटोमेटिकली श्रिंक हो जाएंगे. तो जो यहाँ पे रेस्पिरेशन एक्टिविटी है, प्रोटीन सिंथेसिस एक्टिविटीज आर रिलेटेड, or they will be shows relation with the size shapes of the vacuole cell organ. Then next one is about the functions of the vacuole. Main functions of the vacuole is the maintenance of the turgor pressure. So as you know, you have seen in this figure, the plant cell. In plant cells, vacuole is in a large cell or large in size, and they contains about the 90% of water. So they can maintain the turgor pressure of the plant cell by vacuole. So due to the turgor pressure, the whole size of the cell, then shapes, they will remains the constant. जो भी अदर वैक्यूल छोड़ के जो भी अदर सेल्स ऑर्गेनेलिज है, अदर सेल ऑर्गेनेलिज है, उनको रखने का वैक्यूल्स कंट्रैक्शन और जो भी प्रेशर रिलीज करने का काम है वो सब यहाँ पे करते. वैक्यूल
प्लांट जो प्लांट सेल कंसिडर करेंगे तो पूरा प्लांट सेल जो टर्बो प्रेशर मेंटेन करने का काम है वैक्यूअल सेल और करती है. Then second, mechanical support. So this vacuole maintain turbo pressure of the cell. So automatic and gets the mechanical support to the सराउंडिंग सेल. जो बाकी के बाजू के जो सेल्स रहेंगे तो उसे मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम भी है वैक्यूअल सेल ऑर्गन. देन so these vacuole mean they can maintain the turgidity or they provide the mechanical support. So automatically they can maintain the shape of the tissues or cells or organs. So this shape of the organs is maintained due to this vacuole. ऑब्जेक्टिव के लिए ऐसे पूछ सकते हैं इससे. देन स्टोरेज ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट. It is the vacuole which is also called as dustbin. तो जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है प्लांट्स या एनिमल बॉडी के अंदर सब वेस्ट मटेरियल और जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है these materials will store in this vacuole. That's why this vacuole is also called as dust bin. So also the next function is about unwanted material from the cell. So the vacuole is having the tonoplast, that is the membrane of this vacuole. So then some unwanted metabolites. So जो membrane क्या करता है? They can जो प्लांट से जो सेल्स के लिए जो अननेसेसरी वहां पे मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस होते हैं, नेसेसरी जो वेस्ट है एक्सक्रीट करने का काम ये vacuole cells करते हैं. So there is the functions organ. So जो मैंने बताया जो स्टोमाटा ओपनिंग और क्लोजिंग होता है तो flowers है leaves है these all movements of the plants organ they can maintain by the vacuoles because main the turgid pressure in or decreases by the vacuole. So due to this turgid pressure so all movement of the plant organs are decreased turgid pressure. पे जैसे फ्लावरिंग ओपन ना लीव्स है लीव्स कैसे लीव्स भी जो यंग लीव्स रहते हो ओपन होते जाते हैं और जो ओल्ड लीव्स रहते हैं उनका सीनेसेंस होता है. तो जो लीव्स मूवमेंट है तो स्टोमाटा का ओपनिंग है क्लोजिंग है these all movements of the plants are maintained by these vacuoles. Then these vacuoles are also helps in germination process. So germination it is the vital process in that you have from the seed there is the formations of embryo. So here the new cell will be developed by the cell division process. So the rapid cell division the turgidity of cells is very important. So the growth or turgidity of cells is accelerated by the vacuole. So in case of the germination, सीड क्या होता है जनरली आपने जर्मिनेशन देखा होगा जो सीड्स रहते हैं सीड्स जब भी हम उनको वाटर डालते हैं तो वाटर डाल के वो उसका साइज बढ़ जाता है. साइज बढ़ जाता है मतलब वहाँ का जो प्रेशर है टर्गर प्रेशर है वो टर्गर प्रेशर बढ़ जाता है. टर्गर प्रेशर बढ़ने के कारण उसके अंदर जो भी एम्ब्रियोस ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है. तो वहाँ पे जो टर्जिडिटी है और जो प्रेशर क्रिएट करने का काम ये वैक्यूअल सेल ऑर्गेनेली करती है. देन एटोफैगी एटोफैगी
it is the in adverse situation or in controlling the pathogen for the survival. This plant undergo phagy. That means they can eating own cell organelle. That is the and they are uh, litigating. That means lysosomes and they serve as a autophagy. So in some plants क्या होता है कि वहां पे पैथोजन का यदि अटैक बढ़ जाता है या कोई यदि ड्रॉट कंडीशन है मतलब एडवर्स कंडीशन प्लांट के लिए एडवर्स कंडीशन वहां पे हो जाती है तो क्या करते हैं वो खुद ही प्लांट के सेल ईटिंग ओन सेल ऑर्गेनिक जो फुल प्लांट सेल है वो क्या करता है एक एक सेल को ईटिंग करना मतलब वो फिनिश करता है और डैमेज करते जाता है अपने ही सेल्स को मतलब जो वहाँ पे सेल क्वांटिटी वहाँ के सेल ऑर्गेनेलिस कम हो जाएंगे सेल ऑर्गेनेलिस कम हो जाएंगे मतलब उनकी जो नीड है जो फूड नीड है वो फूड नीड में ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी मतलब वो प्लांट सरवाइव थोड़े से फूड पे भी वो प्लांट सरवाइव हो सकते हैं तो इसकी वजह से जो वैक्यूल्स क्या करता है खुद ही जो प्लांट्स के अंदर जो दूसरे सेल ऑर्गेनेलिज है उनको कम करने का काम करता है दिस टर्म एज एटोफैजी देन लाइसिस ऑफ अनवांटेड मटेरियल दैट मीन्स जो अनवांटेड मटेरियल है अनवांटेड मटेरियल को लाइटिक वैक्यूल्स क्या करते हैं वो ड्यू टू दिस खुद को डिफेंस करने के लिए वो जो अदर सेल ऑर्गेनेलिज है अदर सेल ऑर्गेनेलिज को वहां पे डैमेज करता है लाइक द एटोफेगिक्स सेम हियर दीज जो केमिकल सब्सटेंसेस है these chemical substances are they will be damaged by this vacuole cell organelle. Then protein storage at the time of protein these vacuoles is placed uh, protein certain proteins or they can store it proteins at the time of protein synthesis with the help of its single membrane. So these are the different functions of these vacuoles which play a very important role in case of the maintaining the turgor pressure or support or it gives the support to the cells also they can maintain the shape they can store the waste product they can exporting the some unwanted material also they can maintain or they can controlling the movement of plant organs and in at the time of germination they can help for increasing the turgidity of the cells and also in some cases they can use as a autophagy or they can help in the process of excreting out some unwanted material so these are different functions of the vacuoles so here these vacuole will be finished. In short, there is the single membrane bound cell structure and they can enclose the large space of the plant cells. These, according to the occurrence, these vacuoles are present in all types of cells. Then we discuss about structure. There is membrane. This membrane single known as the tonoplast. So important. Then types of vacuoles and lytic vacuoles. They, according to these different physiological activities like the respirations or protein synthesis, the structure change. Then these are some important functions of the vacuole. So here these vacuole will be
If any queries or doubt, you can ask me anytime. Okay.